begin chanting. Bhagava Arahant Samma Sambuddho Swakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Dhammayang Bhagavantam Sadhammang Sasangham Ime Sakare Yatarhanaro Vitehi Avipujayama Sadhu no Bhante Bhagava Suchira Parine Bhutopi Pachima Janatanuka Pamanasa Rime Sakare Dugat Panakara Bhute Patiganatu Amhakam Digarata Hitaya Sukhaya Arahang Sama Samma Sambuddho Sambuddho Bhagava Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Handmayam Buddhasta Bhagavato Ubbhavagnam Karam Karumasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Handmayam Buddhanusatinayam Karumasi Tangkopana Bhagavanta Evang Kalyana Kiti Saddo Abhugato Iti Piso Bhagava Arhan Samma Sambuddhasa Sambuddho Vidyachar Vidyacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Anuttaro Purisa Dhammasa Sarati Satta Deva Manussana Sanam Yuddho Bhagavati Handmayam Buddha Vigitim Karumasi Buddhavarahanta Varta Diguna Bhiyuto Suddha Vijnana Karuna Isamagatato Dodesiyo Sujanatang Kamalang Vasuro Vandamiham Tamarna Sirsa Jinendam Buddhoyo Sabbapanina Saranam Khemamuttamang Pathamanusatitthana Vandamitam Sirenam Buddhasasmidasoa Buddho me samikissaro Buddhasaham niyademi Sariram jivitam chidam Vandantoham charissa Buddhaseva subodhitam Saranang anyang dhammo me saranang varam
एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं हिदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा बुद्धिर्बलं प्रकटमय बुद्धोपटिगणातो अचिन्त्यं कालान्तरे संवरितं बुद्धे आनन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको उपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्योहीति आनन्दमयं ब्रह्माविगीतिं करोमसि स्वाकाततादिगुणयोगवशेन तादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमोकभेदो धम्मो कुलोकपतना तदधारिधारी वन्दाम्यहं तमरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमम् द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणम् ब्रह्मस्तस्मिन्नासीव धम्मो मे सामि किस्सरो धम्मः मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं हिदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा धम्मे प्रकटमय धम्मोपटिगणातो अचिन्त्यं कालान्तरे संवरितं धम्मे आनन्दमयं सङ्गानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकस्याति आनन्दमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो यो अट्ठविधो हरियपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपराशयकाय चित्तो वन्दाम्यहं तमर्यानगणं सुशुद्धं संगो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं तृतीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणम्
සංඝස්තස්මි දාසෝව සංඝෝ මේ සාමිකිස්සරෝ සංඝස්සහම් නියාදේමි සරීරං ජීවිතං චිදම් වන්දන්තෝහං චරිස්සාමි සංඝස්සේ පටිපන්නකම් යාත්ති මේ සරණං අඤ්ඤ සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සජ්ජ වජ්ජේන සම්දේයම් සත්තු ශාසනේ සංඝං මේ වන්දමානේන යම් පුඤ්ඤං පසුතම් එදා සම්මේපි අන්තරායාමි ආයසම් තස්ස තේජසා ආයන වාචා මච්චේස සංඝේ කොම්මං පක්ඨමය සංඝෝ පටිඝනාත චේත කාලන්තරේ සම්මරිතම්ම සංඝ महाकश्यप भोजन का सूत्र में पाठ किया මහා කස්සපත්තේර බොජ්ජංග සුත්ත. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා රාජගහේ විහෙරති වේලුවනේ කලන්දක නිවාපේ තේන කෝපන සමයේන ආයස්මා මහා කස්සපෝ පිප්පලි ගුහායන් විහෙරති ආබාධිකෝ දුක්ඛිතෝ බාලගිලානෝ. අතකෝ භගවා සායන්න සමයං පටිසල්ලානා බුද්ධිතෝ යේනායස්මා මහා කස්සපෝ තේනුපසංකමී. උපසංකමිත්වා පඤ්ඤත්තේ ආසනේ නිසීදි නිසජ්ජකෝ භගවා ආයස්මන්තං මහා කස්සපං ඒතදවෝච. කච්චිතේ කස්සප කමනීයං කච්චි යාපනීයං කච්චි දුක්ඛා වේදනා පටික්කමන්ති නෝ අභික්කමන්ති. පටික්කමෝසානං පඤ්ඤායති නෝ අභික්කමෝති.
न मे भन्ते खमनीयं न यापनीयं बाला मे दुःखा वेदना अभिक्रमन्ति नो पटिक्रमन्ति अभिक्रमोसानं पඤ්ඤායති नो पटिक्रमोति सत्तिमे कස්සप बुද්ධංගා मया सम्मदක්ඛාතා භාවිතා බහුලීකතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති කතමේ සත්ත සති සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති විරිය සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති පීති සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති සමාධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉමේ කෝ කස්සප සත්ත බුද්ධංගා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බහුලීකතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති තග්ග භගව බොජ්ජංගා තග්ග සුගත බොජ්ජංගාති
ඉදමවෝච භගවා අත්තමනෝ ආයස්මා මහා කස්සපෝ භගවතු භාසිතං අභිනන්දී උත්ථාහි ඡායස්මා මහා කස්සපෝ කම්මා ආබාධා තථා පහිනෝ ඡායස්මතෝ මහා කස්සපස්ස සෝ ආබාධෝ අහෝසීති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු We'll now listen to the Deshna Hoyancha. Title is The Training of the Heart. Third talk in this collection. This is entitled The Training of the Heart. And this was also first published in Bodhinyana. And it was a talk given to a group of Western monks from Wat Pawoniwait in Bangkok in March of 1977. And the note says, in this translation, heart is used where mind was used in the other translations. The training of the heart. In the time of Ajahn Mun and Ajahn Sao, life was a lot simpler, a lot less complicated than it is today. In those days, monks had few duties and ceremonies to perform. They lived in the forests without permanent resting places. There they could devote themselves entirely to the practice of meditation. In those times, one rarely encountered the luxuries that are so commonplace today. There simply weren't any. One had to make drinking cups and spittoons out of bamboo, and lay people seldom came to visit. One didn't want or expect much, and was content with what one had. One could live and breathe meditation. The monks suffered many privations living like this. If someone caught malaria and went to ask for medicine, the teacher would say, "You don't need medicine, keep practicing." Besides, there simply weren't all the drugs that are available now. All one had were the herbs and roots that grew in the forest. The environment was such that monks had to have a great deal of patience and endurance. They didn't bother over minor ailments. Nowadays, you get a bit of an ache and you're off to the hospital. Sometimes one had to walk 10 to 12 kilometers on arms round. You would leave as soon as it was light and maybe return about 10 or 11 o'clock. One didn't get very much either, perhaps some glutinous rice, salt, or a few chilies. Whether you got anything to eat with the rice or not didn't matter. That's the way it was. No one dared complain of hunger or fatigue. They were just not inclined to complain, but learned to take care of themselves. They practiced in the forest with patience and endurance alongside the many dangers that lurked in the surroundings. There were many wild and fierce animals living in the jungles, and there were many hardships for body and mind in the ascetic practice of the Dhutanga, or forest-dwelling monk. Indeed, the patience and endurance of the monks in those days was excellent, because the circumstances compelled them to be so. In the present day, circumstances compel us in the opposite direction. In ancient times, one had to travel by foot. Then came the ox cart, and then the automobile.
Aspiration and ambition increased, so that now, if the car is not air-conditioned, one will not even sit in it. Impossible to go if there isn't air conditioning. The virtues of patience and endurance are becoming weaker and weaker. The standards for meditation and practice are lax and getting laxer, until we find that meditators these days like to follow their own opinions and desires. When the old folks talk about the old days, it's like listening to a myth or a legend. You listen indifferently, but you don't understand. It just doesn't reach you. As far as we should be concerned about the ancient monk's tradition, a monk should spend at least 5 years with his teacher. Some days you should avoid speaking to anyone. Don't allow yourself to speak or talk very much. Don't read books. Read your own heart instead. Take Wat Pah Pong, for example. These days, many university graduates are coming to ordain. I try to stop them from spending their time reading books about Dhamma, because these people are always reading books. They have so many opportunities for reading books, but opportunities for reading their own hearts are rare. So when they come to ordain for 3 months following the Thai custom, we try to get them to close their books and their manuals, and while they're ordained, they have this splendid opportunity to read their own hearts. Listening to your own heart is really very interesting. This untrained heart races around following its own untrained habits. It jumps about excitedly, randomly, because it's never been trained. Therefore, train your heart. Buddhist meditation is about the heart, developing the heart or mind, developing your own heart. This is very, very important. This training of the heart is the main emphasis. Buddhism is the religion of the heart, only this. One who practices to develop the heart is one who practices Buddhism. This heart of ours lives in a cage, and what's more, there's a raging tiger in that cage. If this maverick heart of ours doesn't get what it wants, it makes trouble. You must discipline it with meditation, with samadhi. This is called training the heart. At the very beginning, the foundation of practice is the establishment of moral discipline, sila. Sila is the training of the body and speech. From this arises conflict and confusion. When you don't let yourself do what you want to do, there's conflict. Eat little, sleep little, speak little. Whatever worldly habits you may have, lessen them. Go against their power. Don't just do as you like. Don't indulge in your thought. Stop this slavish following. You must constantly go against the stream of ignorance. This is called discipline. When you discipline your heart, it becomes very dissatisfied and begins to struggle. It becomes restricted and oppressed. When the heart is prevented from doing what it wants to do, it starts wandering and struggling. Suffering, dukkha, becomes apparent to us. This dukkha, this suffering, is the first of the Four Noble Truths. Most people want to get away from it. They don't want to have any kind of suffering at all. Actually, this suffering is what brings us wisdom. It makes us contemplate dukkha. Happiness, sukha, tends to make us close our eyes Happiness, sukha, tends to make us close our eyes and ears. It never allows us to develop patience. Comfort and happiness make us careless. Of these two defilements, dukkha is the easiest to see. Therefore, we must bring up suffering in order to put an end to our suffering. We must first know what dukkha is before we can know how to practice meditation. In the beginning, you have to train your heart like this. You may not understand what's happening or what the point of it is, but when the teacher tells you to do something, you must do it. You'll develop the virtues of patience and endurance. Whatever happens, you endure, because that's the way it is. For example, when you begin to practice samadhi, you want peace and tranquility, but you don't get any. You don't get any because you never practiced this way. Your heart says, I'll sit until I attain tranquility. But when tranquility doesn't arise, you suffer. And when there's suffering, you get up and run away. To practice like this cannot be called developing the heart. It's called desertion. Instead of indulging in your moods, train yourself with the Dhamma of the Buddha. Lazy or diligent, just keep on practicing. Don't you think that this is a better way? The other way, the way of following your moods, will never reach the Dhamma. If you practice the Dhamma, then whatever the mood may be, you keep on practicing, constantly practicing. The other way of self-indulgence is not the way of the Buddha. When we follow our own views on practice, our own opinions about the Dhamma,
we can never see clearly what's right and what's wrong. We don't know our own heart. We don't know ourselves. Therefore, to practice following your own teachings is the slowest way. To practice following the Dhamma is the direct way. When you are lazy, you practice. When you're diligent, you practice. You're aware of time and place. This is called developing the heart. If you indulge in following your own views and try to practice accordingly, you'll start thinking and doubting a lot. You'll think to yourself, I don't have very much merit. I don't have any luck. I've been practicing meditation for years now, and I'm still unenlightened. I still haven't seen the Dhamma. To practice with this kind of attitude cannot be called developing the heart. It's called developing disaster. If at this time you're like this, if you're a meditator who still doesn't know, who doesn't see, if you haven't renewed yourself yet, it's because you've been practicing wrongly. You haven't been following the teachings of the Buddha. The Buddha taught like this: Ananda, practice a lot. Develop your practice constantly. Then all your doubts, all your uncertainties will vanish. These doubts will never vanish through thinking, nor through theorizing, nor through speculation, nor through discussion. Nor will doubts disappear by not doing anything. All defilements will vanish through developing the heart, through right practice only. The way of developing the heart as taught by the Buddha is the exact opposite of the way of the world, because his teachings come from a pure heart. A pure heart, unattached to defilements, is the way of the Buddha and his disciples. If you practice the Dhamma, you must bow your heart to the Dhamma. You must not make the Dhamma bow to you. When you practice this way, suffering arises. There isn't a single person who can escape this suffering. So, when you commence your practice, suffering is right there. The duties of meditators are to develop mindfulness, collectedness, and contentment. These things stop us. They stop the habits of the hearts of those who have never trained. And why should we bother to do this? If you don't bother to train your heart, then it remains wild, following the ways of nature. It's possible to train that nature so that it can be used to advantage. This is comparable to the example of trees. If we just left trees in their natural state, we'd never be able to build a house with them. We couldn't make planks or anything of any use in building a house. However, if a carpenter came along wanting to build a house, he would go looking for trees such as these. He would take this raw material and use it to advantage. In a short time, he could have a house built. Meditation and developing the heart are similar to this. You must take this untrained heart, the same as you would take a tree in the natural state in the forest, and train this natural heart so that it is more refined, so that it's more aware of itself and is more sensitive. Everything is in its natural state. When we understand nature, then we can change it. We can detach from it. We can let go of it. Then we won't suffer anymore. The nature of our heart is such that whenever it clings and grasps, there is agitation and confusion. First it might wander over there, then it might wander over here. When we come to observe this agitation, we might think that it's impossible to train the heart, and so we suffer accordingly. We don't understand that this is the way the heart is. There will be thoughts and feelings moving about like this, even though we're practicing, trying to attain peace. That's the way it is. When we've contemplated many times the nature of the heart, we'll come to understand that this heart is just as it is and can't be otherwise. We will know that the heart's ways are just as they are. That's its nature. If we see this clearly, then we can detach from thoughts and feelings. And we don't have to add on anything more by constantly having to tell ourselves that that's just the way it is. When the heart truly understands, it lets go of everything. Thinking and feeling will still be there, but that very thinking and feeling will be deprived of their power. This is similar to a child who likes to play and frolic in ways that annoy us, to the extent that we scold or spank him. We should understand that it's natural for a child to act that way. Then we can let go and leave him to play in his own way. So our troubles are over. How are they over? Because we accept the ways of children. Our outlook changes and we accept the true nature of things. We let go and our heart becomes more peaceful. We have right understanding. If we have wrong understanding, then even living in a deep, dark cave would be chaos. Or living high up in the air would be chaos. The heart can only be at peace when there is right understanding.
then there are no more riddles to solve, no more problems to arise. This is the way it is. You detach, you let go. Whenever there is any feeling of clinging, we detach from it, because we know that that very feeling is just as it is. It didn't come along especially to annoy us. We might think that it did, but in truth, it is just that way. If we start to think and consider it further, that too is just as it is. If we let go, then form is merely form, sound is merely sound, odor is merely odor, taste is merely taste, touch is merely touch, and the heart is merely the heart. It's similar to oil and water. If you put the two together in a bottle, they won't mix because of the difference in their nature. Oil and water are different in the same way that a wise man and an ignorant man are different. The Buddha lived with form, sound, odor, taste, touch, and thought. He was an arahant, so he turned away from rather than towards these things. He turned away and detached, little by little, since he understood that the heart is just the heart and thought is just thought. He didn't confuse and mix them together. The heart is just a thought. The heart is just the heart. Thoughts and feelings are just thoughts and feelings. Let things be just as they are. Let form be just form. Let sound be just sound. Let thought be just thought. Why should we bother to attach to them? If we think and feel in this way, then there's detachment and separateness. Our thoughts and feelings will be on one side and our heart will be on the other. Just like the oil and water. They're in the same bottle, but they're separate. The Buddha and his enlightened disciples lived with ordinary, unenlightened people. They not only lived with these people, but they taught these ordinary, unenlightened, ignorant ones how to be noble, enlightened, wise ones. They could do this because they knew how to practice. They knew that it's a matter of the heart, just as I've explained. So, as far as your practice of meditation goes, don't bother to doubt it. If we run away from home to ordain, it's not running away to get lost in delusion, or out of cowardice or fear. It's running away in order to train ourselves, in order to master ourselves. If we have understanding like this, then we can follow the Dhamma. The Dhamma will become clearer and clearer. The one who understands the Dhamma understands himself, and the one who understands himself understands the Dhamma. Nowadays, only the sterile remains of the Dhamma have become the accepted order. In reality, the Dhamma is everywhere. There's no need to escape somewhere else. Instead, escape through wisdom, escape through intelligence, escape through skill. Don't escape through ignorance. If you want peace, then let it be the peace of wisdom. That's enough. Whenever we see the Dhamma, there is the right way, the right path. Defilements are just defilements, the heart is just the heart. Whenever we detach and separate so that there are just these things as they really are, then they are merely objects to us. When we're on the right path, then we are impeccable. When we're impeccable, there's openness and freedom all the time. The Buddha said, listen, monks, you must not cling to any Dhammas. What are these Dhammas? They're everything. There isn't anything which is not Dhamma. Love and hate are Dhammas. Happiness and suffering are Dhammas. Like and dislike are Dhammas. All of these things, no matter how insignificant, are Dhammas. When we practice the Dhamma, when we understand, then we can let go. And thus we can comply with the Buddha's teaching of not clinging to any Dhammas. In this sense, Dhamma means the quality or thing or an object, any kind of phenomenon in nature, the conditioned or the unconditioned. All conditions that are born in our heart, all conditions of our mind, all conditions of our body are always in a state of change. The Buddha taught not to cling to any of them. He taught his disciples to practice in order to detach from all conditions and not to practice in order to attain to anything. If we follow the teachings of the Buddha, then we are right. We are right, but it's also troublesome. It's not that the teachings are troublesome, but our defilements. The defilements, wrongly comprehended, obstruct us and cause us trouble. There isn't really anything troublesome with following the Buddha's teaching. In fact, we can say that clinging to the path of the Buddha doesn't bring suffering, because the path is simply let go of every single Dhamma. For the ultimate in the practice of Buddhist meditation, the Buddha taught the practice of letting go.
Don't carry anything around. Detach. If you see goodness, let it go. If you see rightness, let it go. These words, let go, do not mean that we don't have to practice. It means that we have to practice following the method of letting go itself. The Buddha taught us to contemplate all dhammas, to develop the path through contemplating our own body and heart. The Dhamma isn't anywhere else. It's right here, not some faraway place. It's right here in this very body and heart of ours. Therefore, a meditator must practice with energy. Make the heart grander and brighter. Make it free and independent. Having done a good deed, don't carry it around in your heart. Let it go. Having refrained from doing an evil deed, let it go. The Buddha taught us to live in the immediacy of the present, in the here and now. Don't lose yourself in the past or the future. The teaching that people least understand and which conflicts most with their own opinions is this teaching of letting go or working with an empty mind. This way of talking is called Dhamma language. When we conceive this in worldly terms, we become confused and think that we can do anything we want. It can be interpreted this way, but its real meaning is closer to this. It's as if we're carrying a heavy rock. After a while, we begin to feel its weight, but we don't know how to let it go. So we endure this heavy burden all the time. If someone tells us to throw it away, we say, if I throw it away, I won't have anything left. If I told of all the benefits to be gained from throwing it away, we wouldn't believe them. But we would keep thinking, if I throw it away, I'll have nothing. So we keep on carrying this heavy rock until we become so weak and exhausted that we can no longer endure. Then we drop it. Having dropped it, we suddenly experience the benefits of letting go. We immediately feel better and lighter, and we know for ourselves how much of a burden carrying a rock can be. But before we let go of the rock, we couldn't possibly know the benefits of letting go. So if someone tells us to let go, an unenlightened man wouldn't see the purpose of it. He just blindly clutched at the rock and refused to let go until it became so unbearably heavy that he just had to let go. Then he can feel for himself the lightness and relief, and thus know for himself the benefits of letting go. Later on, we may start carrying burdens again, but now we know what the results will be, so we can now let go more easily. This understanding that it's useless to carry burdens around and that letting go brings ease and lightness is an example of knowing ourselves. Our pride, our sense of self that we depend on, is the same as that heavy rock. Like that rock, if we think about letting go of self-conceit, we're afraid that without it, there would be nothing left. But when we can finally let it go, we realize for ourselves the ease and comfort of not clinging. In the training of the heart, you mustn't cling to either praise or blame. To just want praise and not want blame is the way of the world. The way of the Buddha is to accept praise when it's appropriate and to accept blame when it's appropriate. For example, in raising a child, it's very good not to just scold all the time. Some people scold too much. A wise person knows the proper time to scold and the proper time to praise. Our heart is the same. Use intelligence to know the heart. Use skill in taking care of your heart. Then you'll be one who is clever in the training of the heart. And when the heart is skilled, it can rid us of our suffering. Suffering exists right here in our hearts. It's always complicating things, creating and making the heart heavy. It's born here. It also dies here. The way of the heart is like this. Sometimes there are good thoughts. Sometimes there are bad thoughts. The heart is deceitful. Don't trust it. Instead, look straight at the conditions of the heart itself. Accept them as they are. They're just as they are. Whether it's good or evil or whatever, that's just the way it is. If you don't grab onto these conditions, they don't become anything more or less than what they already are. If we grab hold, we'll get bitten and we'll then suffer. With right view, there's only peace. Samadhi is born and wisdom takes over. Wherever you may sit or lie down, there's peace. There's peace everywhere, no matter where you may go. So, today you brought your disciples here to listen to the Dhamma. You may understand some of it you may not. In order for you to understand more clearly, I talked about the practice of meditation. Whether you think it's right or not, you should take it and contemplate it.
As a teacher myself, I've been in a similar predicament. I too have longed to listen to Dhamma talks because wherever I went, I was giving talks to others, but never had a chance to listen. So at this time, you really appreciate listening to a talk from a teacher. Time passes when you're sitting and listening quietly, you're hungry for Dhamma, so you really want to listen. At first, giving talks to others is a pleasure, but after a while, the pleasure is gone. You feel bored and tired. Then you want to listen. So when you listen to a talk from a teacher, you feel much inspiration and you understand easily. When you're getting old and there's hunger for Dhamma, its flavor is especially delicious. Being a teacher of others, you are an example to them. You're a model for other bhikkhus. You're an example to your disciples. You're an example to everybody. So don't forget yourself. But don't think about yourself either. If such thoughts do arise, get rid of them. If you do this, then you'll be able to be one who knows himself. There are a million ways to practice Dhamma. There's no end to the things that can be said about meditation. There are so many things that can make us doubt. Just keep sweeping them out, and then there's no more doubt. When we have right understanding like this, no matter where we sit or walk, there is peace and ease. Wherever we may meditate, that's the place to bring your awareness. Don't hold that one only meditates while sitting or walking. Everything and everywhere is our practice. There's awareness all the time. There's mindfulness all the time. We can see birth and death of mind and body all the time, and we don't let it clutter up our hearts. Let it go constantly. If love comes, let it go back to its home. If greed comes, let it go home. If anger comes, let it go home. Follow them. Where do they live? Then escort them there. Don't keep anything. If you practice like this, you're like an empty house. Or, explained another way, this is an empty heart, a heart empty and free of all evil. We call it an empty heart, but it isn't empty as if there was nothing. It's empty of evil, but filled with wisdom. Then, whatever you do, you'll do with wisdom. You'll think with wisdom. You'll eat with wisdom. There'll be only wisdom. This is the teaching for today, and I offer it to you. I've recorded it on tape. If listening to Dhamma makes your heart at peace, that's good enough. You don't need to remember anything. Some may not believe this. If we make our heart peaceful and just listen, letting it pass by but contemplating continuously like this, then we are like a tape recorder. After some time, we turn it on. Everything is there. Have no fear that there won't be anything. As soon as you turn on your tape recorder, everything is there. I wish to offer this to every bhikkhu and to everyone. Some of you probably know only a little Thai, but that doesn't matter. May you learn the language of the Dhamma. That's good enough. You want to. अब इसका आज के प्रवचन का हिंदी अनुवाद करते हैं। अजान मन और अजान साओ के समय पे जीवन बड़ा सरल था, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बहुत कम कर्तव्य और रहते थे या सेरेमनीज रहती थी। हम लोग जंगलों में रहते थे, कोई पक्का रहने का स्थान नहीं था और सारा समय सिर्फ ध्यान में लगाते थे। जो चीज़ें आज बहुत सहज हैं वो उस समय मिलती भी नहीं थी, वो बहुत लग्जरी मानी जाती थी। हम बांस से अपने पीने के कप और स्पिटून बनाते थे। गृहस्थ लोग भी बहुत कम आते थे विजिट करने के लिए। तो उस समय जीवन बहुत ही कठिन था। अगर कोई बीमार भी हो जाता,
मलेरिया भी हो जाता तो आचार्य कहते थे साधना करते रहो, क्योंकि कोई दवाइयाँ भी वहाँ उपलब्ध नहीं थी। केवल जो हर्ब्स और रूट्स जंगल में मिलती थी उन्हीं के आधार पे हम दवाइयाँ बनाते थे। तो स्वाभाविक तौर पे जो भिक्षु थे उन्होंने बहुत धैर्य और शांति का डेवलपमेंट किया। कई बार भिक्षाटन के लिए 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता था। सुबह सुबह पाँव फटते ही निकलते थे और दोपहर के 10-11 और दिन के 10-11 बज जाते थे आते आते आते, और खाने को भी बहुत कम ही मिलता था। कोई भी शिकायत नहीं करता था भूख की या थकावट की। तो इस तरह से जब साधना करते थे, और जंगल में कई तरह के खतरे भी रहते थे, जंगली जानवर, तो जो दुतंगा प्रैक्टिस के मॉन्क्स थे सचमुच में बहुत अद्वितीय धैर्य और कांति उन्होंने डेवलप की। आजकल परिस्थितियां इससे विपरीत ही हैं, तो इसलिए पहले जैसे हम पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी आई, फिर ऑटोमोबाइल आ गई, और अब तो कार भी अगर एयर कंडीशन ना हो तो लोग उसमें बैठने को नहीं तैयार है। तो कांति और धैर्य कम होता जा रहा है। पुराने जो ट्रेडिशन थे उसमें आचार्य के साथ कम से कम 5 साल बिताने होते थे, और लोग कहते थे कि आज का दिन किसी से बात नहीं करनी है, किताबें नहीं पढ़नी है, सिर्फ अपने मन को पढ़ना है। तो वटपपॉम में शुरू में जैसे कॉलेज के ग्रेजुएट आते थे 3 महीने के लिए उपसंपदा लेके, तो मैं उनको किताबें पढ़ने से रोकता था, क्योंकि वो उसी में अपना समय बिताना चाहते थे। क्योंकि किताब पढ़ने का तो उनके पास बहुत अवसर था, लेकिन अपने आप को पढ़ने का अवसर कहाँ मिलता। अपने आप को जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जो चित्त ट्रेंड नहीं है वो अपनी आदतों के अनुसार ही चलना चाहता है, कभी इधर कभी उधर। तो जो भगवान की शिक्षा है वो मन को प्रशिक्षण देने की शिक्षा है। केवल वही सचमुच में शिक्षा का पालन करते हैं जो अपना मन को प्रशिक्षित करते हैं। जो हमारा मन है उसमें ऐसा समझ लीजिए कि एक भयानक शेर रहता है, और अगर उसको अपनी चीजें जो चाहता है नहीं मिलती तो बहुत परेशान करता है। तो उसको काबू में लाने के लिए समाधि का अभ्यास करना होता है, प्रशिक्षण देते हैं मन को। पहले शील का पालन, जिससे कि वाणी और काया का प्रशिक्षण होता है, ताकि कभी अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप वो नहीं करते जो आपकी मर्जी आए। मुख्य बात है कम बोलो, कम खाओ, कम सो। जो भी संसारिक आते हैं उनको कम करते जाओ, और अपने अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं उसमें मत लगे रहो। इसी को अपने आप को साधना कहते हैं। जब हम मन को रोकते हैं कि जो वो करना चाहता है वो रोकते हैं उससे, तो परेशान होने लगता है, और इसी परेशानी को दुख कहते हैं। तो हमें दुख आर्य सत्य समझ में आता है, जो पहला आर्य सत्य है। अधिकतर लोग उससे भागना चाहते हैं और उसको जानना, उसको समझना नहीं चाहते। जब सुख आता है तो हम अपने आंखें और कान बंद करके कोई पेशेंस की डेवलप नहीं करते, और सुख में एक्चुअली हम केयरलेस होने की संभावना रहती है।
शुरू शुरू में इस प्रकार हम अपने चित्त को ट्रेन करते हैं। कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि जो आचार्य कह रहे हैं वो करते जाओ, और धीरे धीरे जो सहनशीलता है और धैर्य है वो बढ़ता चला जाता है। जब हम समाधि का अभ्यास करते हैं तो हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र मन हमारा शांत हो जाए, लेकिन वो शांति आती नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि कई बार मन में विचार करते हैं, अच्छा आज मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक शांति ना आ जाए, और जब शांति नहीं आती तो परेशान होते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको साधना नहीं कहते हैं, उसको भागना कहते हैं। चाहे आलस्य हो, चाहे बहुत इंटेलिजेंस हो, साधना करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है। चाहे कैसा भी मूड हो, साधना करते रहो। यदि हम अपने विचार के हिसाब से समझने लगे हमारे विचार क्या है धर्म के बारे में, तो कभी भी हम ठीक क्या है और गलत क्या है वो पहचान नहीं पाएंगे, अपने को ठीक से जान नहीं पाएंगे। तो ये हुआ कि आप अपनी शिक्षा के हिसाब से अपने आप को चलाना चाहते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से चलने लगोगे तो कहोगे ओ मुझ में ज़्यादा पुण्य नहीं है, आज मेरी किस्मत नहीं है, इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ अभी भी मैं एनलाइटन नहीं हुआ। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड है तो उसको चित्त को प्रशिक्षित करना नहीं कहते, उसको कहते हैं कि आप चित्त को परेशान कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से साधना करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी सत्य ठीक से समझा नहीं है। जो भी आपकी शंकाएं हैं वो सिर्फ विचार करने से नहीं जाएंगी, साधना करने से ही समाप्त होंगी। तो यदि आपको धर्म का पालन करना है, धर्म की शिक्षा का अभ्यास करना है, तो आपको धर्म के प्रति झुकना होगा। जैसा वो कहा जा रहा है वैसे ही करना होगा। इस तरह से करने में कष्ट जरूर होता है, लेकिन वही मार्ग है साधना में आगे बढ़ने का। किसी भी साधक का काम है कि वो सती सजगता, चित्त की एकाग्रता बनाए और संतोष बनाए। ये चीजें हमको रोक के रखती हैं। क्योंकि अगर ये डेवलप नहीं करेंगे तो हमारा चित्त जो है एक जंगली जानवर की तरह रहता है, जो उसके मन में आता है वो करना चाहता है। जैसे पेड़ हैं, वो अपनी स्थिति में पड़े हैं, तो उनसे हम घर नहीं बना पाएंगे। अगर पेड़ों से घर बनाना है तो एक अच्छा कारपेंटर आता है, वो उसको देखता है, उनको साफ करता है उसको, और तब जाके घर बनता है। तो इसी प्रकार से अपने चित्त को डेवलप करना भी घर बनाने जैसा है। उसको रिफाइन करना पड़ता है, अपने आप की अपनी सजगता बढ़ानी पड़ती है। हमारे चित्त का स्वभाव ये है कि जब भी वो किसी चीज को चिपकता है, किसी चीज को ग्रैस्प करता है, तो बेचैनी होती है, कंफ्यूजन होता है। पहले वो इधर उधर भटकता है, और जब हम इस तरह के भटकाव को देखते हैं तो हम सोचते होंगे वो चित्त को संभालना तो बड़ा ही मुश्किल है। हम समझते नहीं है कि इस चित्त का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन जब हम भाई कई बार बार उसको देखते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि चित्त ऐसा ही है, और इसको
इसके नैसर्गिक स्वभाव को समझना चाहिए। और जब हम इस तरह से समझ जाते हैं तो जो भी उसके विचार आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, उनके प्रति चिपकाव नहीं रहता, हम उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ते। तब हो सकता है कि विचार भी हों, फीलिंग्स भी हों, लेकिन आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि आपने उसको शक्ति नहीं दी उन विचारों को। ये उसी तरह से है जैसे कोई बच्चा जो है छोटे छोटे खेलों से खेलता रहता है और हम हो सकता है उसको देख के परेशान हो जाए, उसको डांटने भी लगे, लेकिन हमको समझना चाहिए कि एक छोटे बच्चे के लिए वैसा व्यवहार करना स्वाभाविक है। तब वो जब हम समझ जाते हैं तो हम उसको जो करता है वो करने देते हैं घर में, और हम परेशान नहीं होते, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ भी बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो इसी प्रकार से हमको एक्सेप्ट करना होता है कि मन ऐसा ही होता है, और फिर वो अपने आप शांत हो जाता है। तो इसी को एक समझदार अंडरस्टैंडिंग या सम्मादिट्ठी कहा जाता है। अगर हमारी दृष्टि गलत होगी तो वो ऐसे ही है जैसे कि अंधेरी गुफा में रह रहे हैं और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुख्य बात यही कि आप डिटैच रहो, चीज़ों को चिपको मत। जब भी किसी चीज़ से, किसी वेदना से, किसी अनुभव से चिपकाव होने लगता है उसको जानो, और अगर उसके साथ हम चिपकाव को त्याग करते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ रूप है, ये शब्द है, ये गंध है और ये चित्त है। तो वैसे ही हो जाए जैसे पानी और तेल हो, वो इकट्ठे बोतल में रख दिया जाए लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं करते, अलग बने रहते हैं। इसी प्रकार तेल और पानी ऐसे ही में फर्क ऐसा ही है जैसे एक समझदार आदमी और एक नासमझ आदमी में होता है। भगवान बुद्ध भी रूप, वेदना, रूप, शब्द, गंध के साथ रहते थे, वो मुक्त थे, तो उन सब चीज़ों से उनको असर नहीं पड़ता था, वो उनको प्रति बिल्कुल डिटैचमेंट थी। और धीरे धीरे इतनी जब उनकी जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ती गई तो उनको समझ में आ गया और वो समझ गए कि हाँ ये चित्त है, ये विचार है, और दोनों को आपस में मिक्स नहीं किया कि ये जानने वाला है और ये जाना जा रहा है और वो अलग रहे। तो इसी तरह से विचार अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग है, चाहे जैसे भी रूप हो, जैसी भी शब्द हो, जैसे भी विचार हो, हमें उनसे चिपकने की क्या जरूरत है। अगर हम उसको विरक्ति भाव से देखते हैं और उनको अलग समझते हैं तो हमें कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। वैसा ही है जैसे पानी और तेल एक बोतल में है लेकिन अलग पड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध की और उनके महान शिष्यों की यही शिक्षा थी। वो भी लोगों के बीच में ही रहते थे और लेकिन हर सबको ऐसा ही सिखाया करते थे, इस तरह से साधना करना। अगर आप घर छोड़ के भिक्षु बनने के आए हैं तो इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे आके भ्रम में पड़े रहें, ना ही आप किसी भय के कारण इधर आए हैं। आप यहाँ पे अपने आप को सुधारने के लिए आए हैं, अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए आए हैं। जब हम इस तरह से समझते हैं तो धर्म की शिक्षा हमारे और स्पष्ट होती चली जाती है। दिक्कत हो गई है कि आजकल केवल ऊपरी ऊपरी छिलके ही धर्म के समझने लगने लोग समझते हैं कि वही धर्म है, जबकि धर्म जो है सर्वव्यापी है। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है अपने धर्म को जानने के लिए और प्रज्ञा जगाने के लिए। आपको अगर संसार से भागना है तो प्रज्ञा के साथ भागिए, अविद्या के साथ नहीं। भगवान बार बार कहते थे भिक्षु
किसी भी धम्म के साथ चिपकना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी चिपकाव नहीं होना चाहिए। धम्म क्या है? सब कुछ धम्म, धम्म में सब कुछ आता है। मैत्री, प्रेम, नफरत, सुख, दुख, सब धम्म है। और जैसे जैसे हम साधना ठीक से करते हैं, ये सब बातें हमारी खुद समझ में आने लगती हैं, और फिर हम भगवान की शिक्षा के अनुसार किसी भी धम्म के प्रति चिपकाव नहीं रखते। हम जानते हैं कि सब चीज़ें जो हैं, जो कंडीशंस हैं, जो मन की परिस्थितियां हैं, वो हमारे भीतर ही पैदा होती हैं और बदलती रहती हैं। तो बदलती रहती हैं, और भगवान ने सिखाया है कि इसलिए उनके साथ चिपकाव मत करो, ना ही कुछ उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश करो। हम भगवान की शिक्षा जब हम पालन करते हैं तो कष्ट तो होता ही है। वो कष्ट इसलिए होता है कि शिक्षा में गड़बड़ नहीं है, कष्ट इसलिए होता है कि हमारे विकार जो हैं वो ठीक से समझने नहीं देते शिक्षा को। भगवान की जो सबसे अल्टीमेट शिक्षा थी वो यही थी, लेटिंग गो। किसी भी चीज को अपने ऊपर संभाल के अपने साथ चिपका के मत ले चलो। अगर अच्छाई दिखती है तो ठीक है, अच्छी बात है, और उसके साथ मत चिपको। बुराई दिखती है तो उसके साथ मत चिपको। ये जो शब्द हम कह रहे हैं लेट गो, इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करनी। इसका मतलब है कि हमको ये तरीका अडॉप्ट करना है साधना करने का, कि किसी के साथ भी हम चिपकेंगे नहीं, किसी भी धम्म के साथ चिपकेंगे नहीं। तो इसलिए हर साधक को खूब वीर्य के साथ साधना करनी होती है, और चित्त को प्रफुल्लित और इंडिपेंडेंट करना होता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसको अपने सिर में उठा के घूमते मत फिरो, त्याग कर दो उसका भी। भगवान ने हमें यही सिखाया कि इस समय वर्तमान में जियो, पास्ट और भूतकाल और भविष्य में मत फंसे रहो। यही शिक्षा जो है, त्याग की शिक्षा, लेटिंग गो की शिक्षा, यही लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि हम जब संसारिक शब्दों में इसको समझते हैं, संसारिक व्यवहार में देखते हैं, तो बड़े अजीब लगते हैं कि हम कैसे चीजों को छोड़ सकते हैं। लेकिन हम ये समझते नहीं है कि कोई भी जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, वो एक बड़ा भारी पत्थर के साथ रखने वाली बात हो जाती है। हम महसूस भी करते हैं कि बड़ा बर्डन है, बड़ा भार है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। कोई हमें कहे अरे छोड़ दो पत्थर, तो क्यों छोड़ दूं? तो अगर मैंने छोड़ ही दिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा? अगर उससे कोई कहे कि भाई पत्थर फेंकने से कितने लाभ होंगे, तो हम कभी उसका विश्वास नहीं करेंगे। मैंने यही छोड़ दिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा? तो ये सामान्य प्राणियों का आजकल का जीवन ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अगर कोई सचमुच में साधना करने आता है, उसको त्याग कर देता है, तो स्पष्ट और शीघ्र ही उसको त्याग करने के लाभ महसूस होने लगते हैं। चित्त हल्का हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और फिर जब खुद महसूस होता है तो फिर लगता है कि हाँ, अब मैं और इसको दोबारा नहीं उठाऊंगा। हमारा जो अहम है, जो हमारा अहंकार है, वो ऐसा ही है जैसे एक बड़ी भारी पत्थर हमने बांध रखा अपने ऊपर। अगर हम अहम भाव को छोड़ने की बात करते हैं तो घबरा जाते हैं, इसके बगैर मैं क्या होगा, मैं क्या रह जाऊंगा। लेकिन जब सचमुच में छोड़ते हैं तो महसूस होता है कितना मन शांत हो गया। इसी प्रकार ना प्रशंसा से, ना अपयश से, ना यश से हमें किसी चीज से चिपकना नहीं चाहिए। ये उसी तरह से है जैसे एक छोटे बच्चे को हम पालते हैं, उसको हमेशा
डांटते नहीं रहना चाहिए। एक समझदार आदमी जानता है कि बच्चे को कब डांटा जाए और कब उसकी प्रशंसा की जाए। इसी प्रकार हमको अपने चित्त को ट्रेन करना होता है, कब उसको थोड़ा डांटा जाए और कब उसकी प्रशंसा की जाए। दोनों ही साथ करते रहेंगे तो वो सुधरने लगता है। मुख्य बात यही है कि किसी भी तरह के विचार हो उनको पकड़ के मत रखो। जब दृष्टि इस तरह से सम्यक हो जाती है तो शांति शांति आती है, समाधि भी फिर उस तरह से पुष्ट होने लगती है और प्रज्ञा जागती है। कहीं भी तुम बैठो चलो, चित्त शांत रहता है। तो आज तुम अपने शिष्यों को यहाँ लेके आए हो धर्म सीख सुनने के लिए, तो मैंने साधना के तरीके के बारे में बता दिया है। अब तुम्हें ये ठीक लगता है या नहीं लगता तो उसके बारे में विचार करो और देख लो। एक आचार्य के रूप में मेरे को साथ भी यही एक कई बार परेशानी रहती है। मेरी भी ये इच्छा होती है कि मैं भी कहीं जाऊं और धम्म टॉक सुनूं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मुझे वो कहते हैं बोलना ही पड़ता है। जब आप शांति से सजगता से इस धर्म की बात सुनते हैं तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। शुरू शुरू में तो धम्म टॉक देना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में काफी थकान महसूस होती है, तो फिर लगता है कि अब सुना जाए, लोगों को बहुत बोल लिया। जब आप दूसरों के आचार्य बनते हैं तो आप उनके लिए एक उदाहरण बनते हैं, दूसरे भिक्षुओं के लिए एक मॉडल है। इसलिए तुमको भी शायद उनके जो डिसाइपल्स आए थे, जो भिक्षु आए थे, उनके आचार्य को कह रहे हैं, तो इसलिए तुमको भी उनके लिए मॉडल बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नहीं कि आप तुम हमेशा अपने बारे में सोचते रहो। जब इस तरह के विचार आए तो उनका तुरंत त्याग कर दो। धम्म को अभ्यास में लाने के लाखों तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है, एक ही तरह का साधना नहीं है। जब हमारी दृष्टि सम्यक होती है तो हमेशा शांति रहती है। कहीं भी हम बैठ के ध्यान करें, जहाँ भी ध्यान करें वहीं सजगता उपलब्ध हो जाती है। ये मत समझो कि सिर्फ ध्यान जो है बैठे हुए या वॉकिंग मेडिटेशन में होता है। हर चीज और हर परिस्थिति में हम ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सजगता हर समय उपलब्ध है। हम हर समय चित्त का उदय और व्यय देख सकते हैं। निरंतरता से हम चीजें जो भी आती हैं मन में उनको त्याग कर सकते हैं। लोभ आता है उसको जाने देते हैं, गुस्सा आता है उसको जाने देते हैं। तो इस प्रकार साधना हमारी निरंतर हो सकती है। अब इस प्रकार से साधना करोगे तो तुम्हारा चित्त बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जाएगा, जिसी को शून्यता कहते हैं। और जो शून्य चित्त है वो हर बुराई से शून्य है, मुफ्त, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो इसलिए वो प्रज्ञा से भरा रहता है। तो जब आप इस स्थिति से जो कुछ भी काम करते हैं वो प्रज्ञा पूर्वक ही करते हैं। तो ये मेरी आज की आपकी टीचिंग है। आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया है टेप पे। अगर आप सुनने से ध्यान शांत, आपका चित्त शांत होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सब कुछ याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। जो बात समझ में आ गई सुनते सुनते और चित्त शांत हो गया तो वो अपने आप एक हमारा मन जो है टेप रिकॉर्डर की जैसा बन जाता है। जब हम चाहें तब उसको दोबारा याद कर सकते हैं।
ये मेरी आज की आपके लिए शिक्षा है। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत कम थाई जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धम्म की भाषा सीखें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब 4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करेंगे। तो जो हमारी सिलेक्टेड मेहता चांट है, जिसमें अधिक भाग तो मेहता का है और साथ में करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भी भाव आते हैं। क्योंकि हम उससे अभ्यस्त हो चुके हैं, तो मैं चांट करता जाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर रुक के, और हम लोग उसके अनुरूप अपने मन में विचार उत्पन्न करते हुए, शरीर को देखते हुए, सबके प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भाव अपने चित्त में डेवलप करेंगे। और उसका जो शरीर पे असर होता है, उस पर तरंगे देखते हुए उनको फैलने देते हैं चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में। अविरोमि पंजोमि अनिगोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च स ब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अव्यापज्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। आरक्का देवता, भूमट्टा देवता, रुक्खट्टा देवता, आकाशट्टा देवता, अविराहोन्तु अव्यापज्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु।
Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe puggala, sabbe atta bhava pariyapanna, sabba ittiyo, sabbe purisa, sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manussa, sabbe vinipatika, avira hontu, avyapajja hontu, aniga hontu, sukhi attanang pariharantu. Dukkha mucchantu. Yatha nanda sampattito ma vingachantu. Kammasaka, kammadayada, kammayoni, kammabandhu, kammapatisarna. Yam kammam karissanti kalyanang va papakam va tassadayada bhavissanti. Pratimaya disaya, pachimaya disaya, uttaraya disaya, dakhinaya disaya, pachimaya anudisaya, pachimaya anudisaya, uttaraya anudisaya, dakhinaya anudisaya, vittimaya disaya, uparimaya disaya. Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe puggala, sabbe atta bhava pariyapanna, sabba ittiyo, sabbe purisa, sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manussa, sabbe vinipatika. Avirahontu, avyapajjahontu, anigahontu, sukhi attanang pariharantu.
दुःखमुच्यन्तु यथा नन्दा सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसर्न यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति उद्धं याव भवङ्गा च अधो याव अविच्युतो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता पृथ्वी चरा अव्यापज्जा निवेरा च निर्दुःखा च अनुप्लवा उद्धं याव भवङ्गा च अधो याव अविच्युतो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता उदके चरा अव्यापज्जा निवेरा च निर्दुःखा च अनुपन्दवा उद्धं याव भवङ्गा च अधो याव अविच्युतो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता आकाशे चरा अव्यापज्जा निवेरा च निर्दुःखा च अनुपन्दवा सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् पापमागमा मा किञ्चित् शोकमागमा मा किञ्चित् दुःखमागमा भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि